वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की असांजी वीडियो आहे, आज की हमारी वीडियो है ओला बाइक से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। लेट्स स्टार्ट। मिशन इलेक्ट्रिक। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है मिशन इलेक्ट्रिक 2022 ओला इलेक्ट्रिक। सो स्टार्ट करते हैं।
And this is just the tip of the iceberg. Wow, what an amazing year it has been. You know, exactly 1 year ago, I came to you from here. This is the ground zero of India's EV revolution. We shared our dream to make Indian mobility fully electric and to make India a global EV manufacturing hub. Now, over the last year, we've built this factory. This is the world's largest two-wheeler factory. And we've built the world's best scooter. We've also taken our scooter to every corner of the country over India's largest sales and service network. We've had many highs and a lot of learnings too along the way. And I want to truly thank all of you for supporting us, believing in us, and for truly getting India's EV revolution kickstarted. We all grew up in an economy and society defined by oil. And this has created the defining challenge for our generation: pollution and climate change. You know, about 40% of the world's pollution is caused by automobiles. But today, we do have a solution. And the solution is to reject petrol and to build a future with electric transport. And not just that, we can make India a global epicenter for this EV revolution and transformation. Let me actually first step back and paint a global picture for you and India's context in it. The world sells 100 million cars a year and 100 million two-wheelers a year. And India only sells 3 million cars a year and 20 million two-wheelers a year. Only about 200 million people in India own their own vehicle. That's less than 15% of us. And as our economy develops, more than half of us will own a vehicle. Half of India will own a vehicle. This would mean India would sell 20 million cars a year and 50 million two-wheelers a year. And with these numbers, India will become 25% of the world's automotive market, up from just 5% today. Now imagine, if all of these vehicles that we're going to sell in the future, if all of them are petrol and ice driven, just imagine the pollution in our cities. You know, pollution in our cities will triple. We can't live like that. We can't build this as our future. We have to build an EV-driven future. This global EV revolution so far has been limited only to the West and to China. But to truly take the EV revolution to humanity scale, India will have to be the epicenter of change. Now in the West, the average price of a car, of an EV car, is $70,000. We in India and the rest of the world can't afford such costly vehicles. The average selling price of a car in India is $25,000. Hence, a focus on India means a very different product roadmap, much more relevant to our markets and our consumer needs. And as we build for India, we will also be creating the EV paradigm for the rest of the world. Today, 2/3 of the world's automotive production and manufacturing is in the US, Europe, or China. In this EV future, we can build half of the world's vehicles right here in India. To achieve this dream of being the world's EV hub, we first need to accelerate India's EV revolution. A majority of India and the rest of the world uses two-wheelers for transport. And two-wheelers contribute almost half of our transport emissions. And hence, this is the reason why last year, we made a start with the humble two-wheeler. With our launch, the EV penetration in India in two-wheelers is now 5%, up from 1% last year. We launched the S1 Pro last year, the world's best scooter. It has the best design, best technology, and best performance. Now, in just 7 months, we've sold more than 70,000 S1 Pros. And we've watched as all of you have fallen in love with our product. You love the MoveOS 2 upgrade. And we've had so much fun seeing you enjoy all the features that MoveOS 2 enabled, like music, navigation, and more. Now, we will be taking our software to the next level by releasing MoveOS 3 to everyone this Diwali. MoveOS 3 brings many more exciting features like moods, digital key sharing, proximity unlock, improved regen, documents on your scooter, and many, many more things. Today, we want to take the electric two-wheeler revolution to a much larger scale and democratize EV scooter ownership in India. We promised this to you last year, and as promised, I'm super excited to present the Ola S1 today.
As you can see, it's built on the same platform as the S1 Pro, has the same MoveOS software, and the same brilliant, beautiful design. It has a battery capacity of 3 kilowatt-hour, an ARI certified range of 141 kilometers, 128 kilometers in eco mode of true range, 101 kilometers in normal mode, and 90 kilometers in sports mode. And not just range, it has a top speed of 95 kilometers per hour, which is going to make it the fastest scooter in its segment. It has all the amazing features on software like music, navigation, companion app, reverse mode, and everything else that you love in the S1 Pro. Not just that, but it will support all future software upgrades into MoveOS 3 and beyond. You see a beautiful red here, and in addition to this, there are 4 amazing colors: jet black, porcelain white, neo mint, and liquid silver. And I know the question on everybody's mind, what's the price? Well, it's going to start at an introductory price of 99,999 rupees. You can reserve your S1 at 499 starting today. The introductory price is valid for limited scooters, so make sure you reserve it and buy it before it's sold out. Those who reserve will get early access to buy from September 1st. And purchase opens for all others on September 2nd. And deliveries will start as early as September 7th. We've made financing easier for you with multiple payment options like credit card EMIs and loans. Now you can avail a loan from our 5 finance partners that we've tied up with, or any other offline banking or financial institution of your choice, or even use cash. With EMIs starting at 2,999 rupees and loan processing fee waivers, it couldn't be a better time to buy it. And that's not all. There are many other things that you've all been asking for, and I'm very excited to be launching them today. You can now extend your warranty up to 5 years with our extended warranty product, which will protect your battery, motor, electrical components, and all other standard parts. For those who've already purchased the scooter, you can also buy this warranty as an optional add-on in the Ola app. Another question that we've been getting from our customers is about the hypercharger network. Now this Diwali, we will launch more than 100 hyperchargers across the top 50 cities. And beyond that, the network will continue to expand in the future. If the humble two-wheeler was the start of India's EV revolution, the even humbler cell is going to be the heart of India's EV revolution. Now today, the world produces 1,000 gigawatt-hour of cells a year. Majority of this is in China, Europe, and the US. By 2030, the world will need 10,000 gigawatt-hours, and India alone will need 2,000 gigawatt-hour of cell capacity if we have to lead and electrify all transport. Today, guess how much we produce in India? 0. Now, clearly for us to lead the EV world, we need to make our own cells and make them at this mind-boggling scale. We missed the semiconductor, solar, electronic, and other manufacturing revolutions. But everyone around the world is just getting started with cells and EVs. And so if we invest now and at scale, we can do this and we can lead this. Also, this new era of renewable and electric technology is not a commodity like oil. There is no innovation possible to either reduce cost or to improve performance in commodities. And hence, as we all know, petrol prices only go up. Over the past decade, on the other hand, cost of cells have come down from $1,000 a kilowatt hour to $200 a kilowatt hour, while performance and safety has improved 2 to 3 times. And all this is due to the innovations and R&D that companies around the world have done. Yet everyone agrees that they're just scratching the surface of what these EV technologies can and will enable. You know, over the decade, we will see costs come down to $50 per kilowatt hour. Fast charging of batteries increase 3 to 4 times in speed. Range go up, safety improve with solid-state technologies. And also new materials like sodium, sulfur, silicon, etc., which will enable more supply chain security for us in India. Now, this technology and innovation game is just getting started. And we intend to be a global leader in this over the course of this decade. And that's why we've built this place I'm standing in. We call it the Ola Battery Innovation Center. A world-scale and world-class R&D facility spread across 500,000 square feet. We have the most advanced labs here across cell characterization using machines like scanning electron microscopes, X-ray diffractors, inductively coupled plasma and mass spectroscopes, and many, many more machines. We synthesize our own materials here in our wet and dry labs
where we have the most advanced mixers and furnaces to heat the materials to more than 2000 degrees centigrade, and dry rooms to assemble and test the cells. We also have fireproof safety and performance test labs, where we test all thermal behaviors, which includes overcharge, nail penetration, altitude impact on cells, cycling performance, and also drop and crush tests. And the best highlight of this facility is the amazing 200 people who work here. Some of the smartest people in the world in this domain, most of whom are PhDs in their fields. Now I'm going to show you something very, very special. This is our dry lab in our BIC, and this is the driest, cleanest space here. It's very, very extremely dry, and that's why you have to wear the suit, because otherwise it'll suck moisture out of our skin. And what I'm going to show you now is something extremely close to my heart. This is our first lithium-ion cell. We've made it here, we are very excited about it, and soon we'll be producing it in our gigafactory. And this here is the battery module made from our own cells. Now we are doing a lot of development and testing, comprehensive testing here in our BIC on these cells, and by end of next year, we'll have them in our products. India is going to be the epicenter of the global EV revolution. And to enable this, we have to build a very different futuristic concept of manufacturing. Global scale, automation, world-class quality, and ultimately benefiting the local communities. Now, a year ago, we shared a vision for the two-wheeler factory that we were going to build. And the two-wheeler future factory, when it's fully complete, will be the world's largest two-wheeler factory. But today, we are expanding that vision into a full EV hub, which at full scale will produce 1 million cars, 10 million two-wheelers, and 100 gigawatt-hour of cells every year. This Ola Future Factory, reimagined Ola Future Factory, is going to be the world's largest EV ecosystem at a single site. Now, if we are manufacturing the cells, we are definitely not stopping at scooters. And you know where I'm going with this. There's something magical about cars. I think you never really forget the emotions of your first date or your first car. Also, cars represent the epitome of industrial and technological capability for any country. The American image of large gas-guzzling pickup trucks. The German image of extremely well-engineered luxury cars. The Italian image of super sports cars, or even the Japanese image of high quality and super efficient cars. Countries and generations often get associated with the cars they build. Now, our own very image in India has evolved from the sturdy ambassador to the efficient and reliable Maruti after economic liberalization. Today, India is a young, energetic, and an extremely ambitious country. But the cars we build now are dull and boring. Indian car makers are conservative, thinking that we only want small cars or maybe mid-sized cars. Global automakers think that the Indian market is not ready for world-class technology and hence sell their hand-me-down tech in India. Now we need to change this. We deserve a car that defines this new India, an India that's fearless and believes in writing its own destiny. So what's our car going to be like? Our car is going to be one of the fastest cars in India. With 0 to 100 within 4 seconds. It'll have a range of more than 500 kilometers per charge. It'll be the sportiest car ever built in India. With an all-glass roof, designed to deliver a drag coefficient of less than 0.21, best in its class. It'll have our very own Move OS, one of the most advanced computers in a car. Assisted driving capability as good as any other car in the world.
not only keyless like our scooter, but literally handleless. You know, it'll have the best performance, best design, and the best technology ever built in a car in India. देखोगे क्या? That is so amazing. We are so excited to be building this car. And with these goals, this is the most ambitious car project ever undertaken in India. Built in India, by Indians, but for the entire world. It's been an amazing year, and we have a lot of work to do ahead. This mission of electrifying India and being a global EV hub is possible only because of the freedom we enjoy. To dream big and to build our future the way we want to. To celebrate India's 75th Independence Day and this emotion of freedom, we have something very, very special to end the day with. Jai Hind. आजाद हो तुम, बेखौफ जियो, क्योंकि खौफ से आजाद हो तुम। आवाज उठाओ, क्योंकि खामोशी से आजाद हो तुम। अपने आप के साथ वक्त बिताओ, बीते कल से आजाद हो तुम। रफ्तार महसूस कराओ, हर मंजिल पार कराओ, हर फर्क का जश्न मनाओ। एक नए कल की ओर बढ़ते जाओ, क्योंकि आजाद हो तुम, आजाद हो तुम। जी जनाब, इलेक्ट्रीफाइंग इंडिया। बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ एक एक चीज़ क्लियर करके खोल के रख दी। बिल्कुल हर चीज़ पर रोशनी डाली। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप क्या देख रही हैं फ्यूचर इंडिया का एज ए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स? या बहुत ब्राइट, यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया इतना आगे होगा इन चीज़ों को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर, ईवीज़ को लेकर, कि दूसरे कंट्रीज़ मांगेंगे इंडिया से। बिल्कुल। और अभी भी है, लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा मुझे कामयाबी दिख रही है इंडिया की इस फील्ड में, ईवी को लेकर। यानी चाहे वो बाइक हो, चाहे वो कार हो। अच्छा, मैं बहुत हैरान हुई हूँ, बहुत ज़्यादा हैरान हो गई हूँ। सेल्स खुद बना रहे हैं। बिल्कुल हर चीज़ A to Z, यानी कि जिससे अच्छा एक चीज़ होती है कि हम एक चीज़ 4 टुकड़ों से मिलके बनी है, हम 3 टुकड़े कहीं से मंगा लें और एक पुर्जा अपने एक फुंतरू अपने पास से बना लें और फिर हम वो चीज़ कंप्लीट करके दे दें। और हम क्या कहें, मेक इन पाकिस्तान या मेक इन इंडिया। तो वो ना हुआ ना। आपका बेनिफिट, जब भी आपका बेनिफिट सबसे ज़्यादा है कि आप किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे हो, चाहे वो बैटरी हो। वो भी मेक इन इंडिया हो गया वैसे, थोड़ा नहीं वो भी हो गया लेकिन देखिए सही मायनों में तो ना हुआ ना। मज़ा तो जब है जब आपका दिल मुतमईन। एक चीज़, एक सुई भी अगर लग रही है तो वो भी आप मेक इन इंडिया हो, वो भी इंडिया में बन रही हो और फिर इंडिया में यूज़ हो रही हो। ये ज़्यादा बड़ी बात है, ये वाकई जैसे कहेंगे कंडक्टर का मसला, सेल्स वगैरह का, बैटरी वगैरह का, आपने बीच में एक वीडियो भी देखी होगी, बहुत था। यानी कि पूरी दुनिया में ये मसला छिड़ा हुआ है और मैं वाकई बहुत खुश हुई हूँ ये वीडियो देखकर कि किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं होना है, किसी भी औजार को लेकर, किसी भी कोई पार्ट हो, कोई एक ऐसा पार्ट हो बाइक का या कार का कि आप डिपेंडेंट हो जाओ कि वो चीज़ अगर रुक गई, वो पार्ट नहीं आ रहा बाहर किसी कंट्री से, तो आप
कार्स की मैन्युफैक्चरिंग रोक दो, आप बाइक्स की मैन्युफैक्चरिंग रोक दो, और फिर लोगों को, फिर आपको कितना लॉस होगा, यानी कि आपका तो पूरा कारोबार ही चौपट हो जाएगा ना एक पार्ट की वजह से, एक पुर्जे की वजह से। बिल्कुल, आपका सारा सेटअप, इतना बड़ा सेटअप होता है, वो सारा रुक जाएगा। किसी भी कंट्री में कोई भी प्रॉब्लम आ गई। बहुत अच्छी बात है इंडिया की, इंडिया डिपेंडेंसी को पसंद नहीं करता। बिल्कुल, कोई कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर बने हम। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, कोई भी काम करो, किसी भी फील्ड में, अगर आपकी कोई भी मेक इन इंडिया बना रहे हैं, अपने कंट्री में कोई चीज़ बना रहे हैं, तो ये तो इनका भी फोकस है, लेकिन वैसे भी कामयाबी का एक उसूल है, आप उस फील्ड को, उस स्पेसिफिक चीज़ में इंतहा तक पहुंच जाए, अपनी ग्रैब रख लो। यानी आपकी ये फोकस हो, आपका ये सोच हो कि मेरी मार्केट इंडिया नहीं है, मेरी मार्केट तो और बड़ी है, पूरी दुनिया। सही। यानी आप एक चीज़, सबसे पहले तो आप चीज़ बहुत बड़े बल्क में बनाते हैं। आप कह रही थी बहुत बड़ा सेटअप है, बहुत बड़ा। अच्छा, जितना बड़ा सेटअप होता है ना, उतनी चीज़ की कॉस्ट कम हो जाती है। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहूँ कि एक बाइक बनाएं, आप उस बाइक का ढांचा बनवाएंगी, उसका इंजन महंगी पड़ जाएगी, बहुत महंगी पड़ जाएगी, बहुत। लेकिन अगर आप मुझे कहें 10,000 बनाए, ठीक है ना। तो अच्छा, फिर वो एक लाइन लगती है एक पाइपलाइन में, फिर कस्टमर, वो जो मुलाजिम होते हैं, जो लोग होते हैं, जो कारीगर होते हैं, वो स्पेसिफिक अपना अपना काम करते हैं, चेन बन जाती है ना, चेन बन जाती है। तो वो आपको चीज़ बहुत 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 कम में पड़ती है। अच्छा, जब आपको चीज़ बहुत कम में पड़ती है, फिर आप क्या करते हो? फिर आप बहुत बनाते हो, बहुत बनाते हो, तो आपका जो कंट्री है उसकी एक सिस्टम है, एक लिमिट है। आपका एक शहर है, फिर उसके बाद दूसरा शहर, फिर दूसरा राज्य, तीसरा राज्य, आपने अपने कंट्री को कवर कर लिया। अब ये बाइकें आपने अपने पूरे मुल्क में फैला दी। अब जब 4, 10, 15 साल होंगे तो ये पुरानी होंगी, फिर शायद नहीं बिकेंगी, ठीक है ना। तो एक थोड़ा सा वो आ जाता है, फ्लो आ जाता है। अच्छा, अंतर लेकिन आपका फोकस पूरी दुनिया है। अंतर के हवाले से वीडियो में भी थोड़ा सा डिफाइन किया गया है, $75,000 अगर आप बाहर से इम्पोर्ट 70,000 75 आई थिंक 25 इंडिया इनका था, हाँ, और उनका 75 था, क्योंकि मैं कह रही थी 3 गुना ज़्यादा है, 3 गुना से मुझे याद रह गया। तो कितना, आप मुझे बताएं, थोड़ा बहुत फ़र्क लग रहा है आपको? अच्छा खासा फ़र्क है। तो उसकी वजह यह है कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपने अपने मुल्क में बनाई, कम बजट में बनाई, सस्ती बनाई, आवाम को भी सस्ते में फराहम की। तभी होता है, बाज़ दफ़ा लोग ऐसे होते हैं कि चीज़ भले सस्ते में बना देते हैं, लेकिन हम ये करते हैं कि नहीं यार, आवाम को क्यों फ़ायदा दें, आवाम को क्यों बेनिफिट दें। लेकिन आप अगर अपनी सेल को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी चीज़ को पूरी दुनिया में तक लेके जाना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको वो कॉस्ट रखनी होगी। कॉस्ट कम कैसे होगी? जब आप बल्क में बनाएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी सोच, और ख़ास तौर पे ओला जो कंपनी है, इनकी सोच सिर्फ एक मुल्क नहीं है, इनकी सोच पूरी दुनिया है। पूरी दुनिया में इनका मकसद है कि पूरी दुनिया में ये चीज़ जाए। इन फ्यूचर कार का प्रोग्राम जो है, कार का प्लान है। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा सेंटेंस लगा जब उन्होंने कहा कि हम ऐसी कार्स, क्योंकि इन फ्यूचर इनका है, इरादा है, तो उसके हवाले से भी थोड़ा सा हमें मतलब वीडियो में बता दिया गया कि क्या जज्बाती कर दिया। हाँ, कैसा देखोगे कितने एडवांस लेवल की बनाना चाहते हैं, सब कुछ सारी चीज़ें बताई। तो उन्होंने बिल्कुल लास्ट में कहा कि हम ऐसी कार्स डिज़र्व करते हैं कि जो इंडिया को डिफ़ाइन करें कि इंडिया क्या है। बड़ी बात है, ठीक है ना, बहुत गहरी बात, बहुत गहरी बात है कि जो देखे वो देखता रह जाए। बिल्कुल, ये मेक इन इंडिया है। हैरान को बिल्कुल। और वैसे भी इस वीडियो को देख के, इतना बड़ा सेटअप देख के, ईवी के हवाले से, मुझे तो सेल्स का ही सेटअप अपने आप में बहुत बड़ा लगा। वो बता रहे थे कि बिल्कुल ऐसे टेस्टिंग अलग हो रही है, उसके अंदर अच्छा कौन से केमिकल्स यूज हो रहे हैं, लिथियम, पूरे लैब लग रही थी, पूरी लैब टेस्टिंग अलग हो रही है। बहुत अच्छा ड्राई रूम आपने देखा था? बहुत मतलब क्या है, अगर मैं ये ना पहनूं तो मेरी मॉइस्चर जो है मेरी स्किन का, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अच्छा, वो इस हद तक ड्राई रूम था। मतलब वो एक बनाया गया था सेल की वजह से, मतलब वहाँ पर सेल उससे ज़्यादा देर तक वो नहीं रह पाएंगे, कुछ ऐसा प्रॉब्लम होगा। वेट रूम था, ड्राई रूम था। तो मैं ये कहूँगी छोटे मोटे सेटअप नहीं करते भाई ये लोग, बहुत बड़े बड़े सेटअप हैं। यानी आप जैसा या मेरे जैसा बंदा चाहे तो हम तो दंग हो जाएं कि भाई कैसे करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, बिल्कुल कैसे लगाना है। लेकिन ये कि वाकई मतलब इनकी सोच बहुत बड़ी है। और अक्सर हम सुनते भी रहते हैं कि जब तक आप अपनी सोच बड़ी नहीं करेंगे, कभी भी आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो वाकई बहुत बड़ी सोच, बहुत बड़ा सेटअप, बहुत आगे की सोच, बहुत बल्क में बनाने की सोच ईवी के हवाले, और दुनिया को कुछ देने की, इंडिया के साथ साथ दुनिया में, और इंडिया का नाम रोशन करने की। बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।